If I chant in the proper way, then my predecessor, the Acharya, will be satisfied. That is my spirit. If I don't invent in my own way, I am very glad that Krishna has sent so many nice boys and girls to help me be blessed on this auspicious day. There is nothing mine. I am simply a postal peon and delivering to you what I have heard from my Guru Maharaj. Simply, you also act in the same way. You'll be happy, and the world will be happy, and Krishna will be happy. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. So for Srila Prabhupada's 129th Vyasa Puja, we would like to offer you, Srila Prabhupada, this garland of glorifications from all your second, third, fourth, and even fifth generation of devotees. We all wanted to take this opportunity as devotees from ISKCON Vrindavan to glorify you, Srila Prabhupada, in so many different ways. And we thank you for giving us the opportunity to serve your mission here in ISKCON Vrindavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. My name is Panchagauda Das, disciple of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I feel extremely fortunate and grateful that Srila Prabhupada, empowered by Chaitanya Mahaprabhu to deliver all the fallen conditioned souls, made great sacrifice and perfectly represented the Guru Parampara. We're all very, very fortunate to have such a wonderful spiritual master. And on this glorious day of his Vyasa Puja, we should all celebrate with enthusiasm and great determination and gratitude for his divine grace. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. My name is Bhakti Anugraha Janardhan Swami, disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami, and he is one of the dearest most disciple also of Srila Prabhupada. So this year we're celebrating Srila Prabhupada's Vyasa Puja, 139th year. What actually I like most of Srila Prabhupada is his humility, his simplicity. And being here in Vrindavan, he taught us how to live simple, but be Krishna conscious. Thank you, Srila Prabhupada, for everything you have done to us. Without you, we will not be here today. Hare Krishna. My name is Prabodhananda Saraswati Swami. I am a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So, Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. He is the preeminent Sikhya Guru. And he's a Acharya for the age. We can speak his books are law books for ISKCON devotees. And no one can be more glorified than Prabhupada. Even in the Brother Vaishnava tradition, we see no one is pleased like Srila Prabhupada. When Chaitanya Mahaprabhu, he gave all credit to Srila Prabhupada. He is Krishna himself, but he gave all credit to Prabhupada for this. हरे कृष्णा। मेरा नाम भक्ति केवल गोपेंद्र स्वामी है और मेरा गुरु भक्ति चरण स्वामी महाराज है और सम्राट गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। तो प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन मेरे जीवन में मैं क्या बताऊं कि मैं पहले प्रभुपाद की किताब को पढ़ने के बाद मुझे इतना आकर्षण हुआ, उसमें मेंशन नहीं था प्रभुपाद है कि नहीं, तो मुझे खींचता हुआ मैं प्रभुपाद के दर्शन के लिए आकर्षित हो गए और तुरंत आपने डेडिकेटेड कर दिया। तो हम वहीं पे जाते हैं, कितनी भी सोसाइटी हम देखते हैं, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइजेशन और इतनी प्रभावशाली प्रभुपाद की जो शक्ति है, अलौकिक शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना प्रवर्तन। तो प्रभुपाद एकदम ऐसे कृष्ण शक्ति धारण किया है जो हम लोग सभी प्रभाव देख सकते हैं दुनिया में। हरे कृष्णा। Srila Prabhupada ki! This is Sarvabhauma Das, originally from Karachi, Pakistan, presently in Vrindavan. This is the mercy of Srila Prabhupada that he has given the Vrindavan to the whole world.
He came from Vrindavan. He lived in Vrindavan. He gave Vrindavan to the whole world. He came to the Vrindavan and he went back to Vrindavan and he wanted everybody to go to Vrindavan. Srila Vrindavan Dham ki, Srila Prabhupada ki. He has changed the whole world. He has made the history. After 500 years or 5,000 years, people find the Gaur Nitai, Radha Shyam, Radha Gopinath, Jagannath in the America, in Africa, in Russia, and in that language, the book all over the world, they will say, oh, the Sanatan Dharam was spread all over the world by a person called A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. I'm Devaki Vallabha Dasi, disciple of His Holiness Bhaktacharya Swami. I'm the second generation in ISKCON, born and raised in ISKCON, Mumbai. Hare Krishna, my name is Srinati and I'm the third generation of ISKCON. I'm born and raised in ISKCON Vrindavan community. We thank Srila Prabhupada for giving us everything that we need to grow in our spiritual life. And we're so fortunate that Srila Prabhupada has built an institution like ISKCON. And he's given us everything, the books, prasadam, and cultural events. So many things that we can never go astray in this material world. And we're very grateful to be a part of ISKCON Vrindavan community. Thank you, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Ranga Devi Goswami. My guru is Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. I have no words to describe what we feel about Srila Prabhupada. I think that my own life, my own family here in Sri Vrindavan Dham is but the fruit of the revolution he brought by applying the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the six Goswamis, and by literally opening the doors to anyone and everyone, irrespective of caste, race, religion, birth, background. So for this reason, we are forever grateful to him. For his mercy, we are here. We are able to be here in Sri Vrindavan. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna, this is Deepta Vedagidasi, disciple of His Holiness Swami Giri Maharaj. Nivritta Terse, Ufagin Yamanat, Bhava Shadi Chotramano Viramat. O Srila Prabhupada, you have brought that ultimate medicine from the spiritual world, thus curing the diseases of millions of suffering humanity. Through your unique, imminent behavior and character, you have not only transformed millions of cookies into happies, but also little children through your sublime and interesting teaching in your books. In the episode of Dhruva Maharaj, you pour out your heart saying that even if you get one single disciple who is as determined as Dhruva Maharaj and take you back to God, you will feel your life is successful. On this most auspicious day, I pray to your lotus feet that may I be determined to please you by distributing God's wealth of their lives. Thank you, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, myself Braj Kishore Das. I am disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For me, becoming Prabhupada conscious is more easy than becoming Krishna conscious, because Prabhupada is so merciful that he gave us so much association, so much personal association by which we can experience him in every moment of our life. And I would say that for me, Prabhupada Parents Day and Disappearance Day is more important than Janmashtami, because I think only through Prabhupada I can know Krishna. In the end, I just want to say thank you, Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. I am Govinda Prem Das and I am disciple of His Holiness Bhakti Dhira Damodar Swami Maharaj. So, Srila Prabhupada, although I am like 2 generations after him, but I never felt closer to him than to anyone else. He is the one who brought us closer to Krishna, and definitely he is the one who brought me close to my spiritual master also. And we can know just by his activity that how much potency he carries in him, how much dear to Krishna he is. As just a single person, he converted the entire world. He brought entire world into Krishna consciousness. Hare Krishna. My name is Dharmatma Das, disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. To His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, blessed with God. He pleased his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj,
the most. And on one occasion, just before the initiation of our Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he pointed out that Srila Prabhupada, he is very keen to hear his spiritual master. And we can see that because he heard so attentively from his spiritual master, therefore he could preach so vigorously and establish the ISKCON Society in New York in 1966. And after that, so many ISKCON centers had established in India and different parts of the world. And this is just because of Srila Prabhupada's determination and dedication for his spiritual master. Hare Krishna, my name is Yadavendra Das and my guru is His Holiness Radha Govinda Maharaj. And I think one of my highlights of Srila Prabhupada was his ability to give very beautiful answers to complicated questions. Like someone asking Srila Prabhupada that could Krishna create a mountain so big and so heavy that he wouldn't be able to lift it? And he said yes, but the next moment his potency would increase so much that he would be able to lift it. And that was such a spontaneous answer, which to me showed his deep understanding of Tattva. Hare Krishna. Myself, Atipriya Daya Sindhu Das, disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So Srila Prabhupada is a real savior of the whole world, because outside people, they are alive, but they are killing themselves. You know, they don't have a destination, but Prabhupada gave us a destination. And the best thing is Prabhupada creates a beautiful family, and I am very grateful to Prabhupada that I am the part of that family. And Prabhupada gave us a seed. We can feed that seed anywhere, anytime, whenever. It will grow and grow. And that is Srila Prabhupada's truth. Thank you. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. हरे कृष्णा। हम तीनों संदीपनी मुनि स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी से इंस्पायर्ड था। और श्रील प्रभुपाद जी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो मुझे पर्सनली सीखने को मिला वो ये था कि उन्होंने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो कृष्ण की शिक्षा है, भगवान कृष्ण की, वो पूरी दुनिया को दी। उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम रुम्पी है और हम सभी सांदीपनी मुनि स्कूल से ग्रेजुएटेड हैं। और ये सब कुछ हुआ है श्रील प्रभुपाद की वजह से, क्योंकि हमारा स्कूल उन्हीं से कनेक्टेड था और हमें जो भक्ति मिली है जिसके कारण उन्हीं के कारण है। और जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रीतम मुखर्जी है। मैं अभी संदीपनी से ग्रेजुएटेड हूँ और मुझे जो सबसे अच्छा श्रील प्रभुपाद का मैसेज लगता है वो है कि वो अपने गुरु की बात को मानते हैं। उन्होंने अपने गुरु की बात को मान के संसार को बदल दिया, संसार में कृष्ण भक्ति को फैलाया और बहुत दूर दूर तक जहाँ लोग जाते नहीं है, जानते नहीं है, वहाँ भी कृष्ण की भक्ति पहुँच गई है। तो आज अगर हम इस जगह पर उपस्थित है तो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की वजह से ही है, बिकॉज श्रील प्रभुपाद इज द बेस्ट। जय जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। Srila Prabhupada gave the whole world Krishna's holy name. He opened the gates of Vrindavan and Mayapur for us. He gave us temple, books, prasadam and loving devotees. He is a caring grandfather, guiding us back to Krishna's home. Because of him, even small children can know Krishna. Thank you, Srila Prabhupada, for giving us the greatest gift, a chance to be with Krishna forever. I pray to Srila Prabhupada to make me one of his soldiers. Srila Prabhupada 129 Vyas Puja ki jai. Hare Krishna, my name is Karnavanta Devidasi and my Guru Maharaj is Vidayananda Maharaj and Jayapataka Swami. I met ISKCON in 1977 in Brazil, and I was looking for a real life, and I saw the body selling books, and I bought one book and started reading Prabhupada's books. It's perfect answer, perfect question. And Prabhupada gave me all his mercy to the books, and I started reading, I started changing my life, and now I'm here in Vrindavan trying to serve him, distributing his books for all over
people they come to visit Krishna Balaram Mandir. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. हरे कृष्णा। मैं अनंत धाम दास परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य। प्रभुपाद मेरे लिए वो है जो मैंने इस जीवन में कभी विचार भी नहीं किया था। मैंने जब जीवन में पहली बार आत्महत्या किया था इन दागों की वजह से, तो वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद ने ही मुझे बचाया। अगर प्रभुपाद ना होते और अगर उस वक्त एक भक्त मुझे मिल के वो भगवत गीता ना देते, तो शायद आज मैं ये बात प्रभुपाद के लिए कभी नहीं बोल पाता। मैं इस पूरे जीवन में श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार रेडी हूँ कि मैं अपना अगर 24 घंटा भी श्रील प्रभुपाद के दूं और या पूरा जीवन भी अगर प्रभुपाद का दूं तो भी कम है। मैं प्रभुपाद का पूरा जीवन आभारी रहूंगा और उनके भक्तों का भी। हरे कृष्णा। माय नेम इज जय केशव दास। आई एम डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी जन्माष्टमी का सीजन है। नेक्स्ट डे शिला प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का व्यास पूजा है। शिला प्रभुपाद जी की जय। तो प्रभुपाद ना होते तबे की होते, मतलब शिला प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज दुनिया में इतना भक्ति का प्रचार नहीं होता। शिला प्रभुपाद जी ने आज देसी विदेशी सारी दुनिया के लोगों को एकत्र करके हरि नाम का प्रचार किया और आज पूरे वर्ल्ड में कम से कम 700 मंदिर हैं और लाखों करोड़ों इस्कॉन के भक्त हैं जो हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद। मेरे गुरु महाराज का नाम हिज ग्रेस कीर्तुदास जी महाराज हैं और मैं उनके शिष्य हूँ। मैं बड़ा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे दीक्षा दी और उनके गुरु महाराज एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनके कारण से मैं इस भक्ति से जुड़ा, महाराज के कारण जिनसे जुड़ा। प्रभुपाद न होते तो की हो तो प्रभुपाद इज अल्टीमेट। प्रभुपाद हैं और क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन प्रभुपाद के विषय में ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया और इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में यात्रा करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार किया हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे बोल। हरे कृष्णा। My name is Anuttama Tattvadas. I'm disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So I felt the countless mercy personally of Srila Prabhupada. In 2021, I came to Sri Vrindavan Dham and I got a rare chance of serving at Srila Prabhupada's house, cleaning the floor. And I desired how fortunate the devotees are. And in 2022, I came back to Vrindavan again and I started serving at Srila Prabhupada's house and I'm serving till now. So I realized the countless mercy of Srila Prabhupada. He is a Karuna Sindhu, the ocean of mercy. Through his mercy, he is distributing the services of Lord Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Prema. So I felt it personally. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। वृंदावन इस्कॉन मंदिर से हम लोग सारे भक्त बोल रहे हैं और सभी भक्त लोग ये प्रसाद सेवा करते हैं और हमारा प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा विश्व वर्ल्ड में ये प्रसाद सेवा चल रहे हैं और हमारा जब तक जीवन रहेगा तो हम सोच रहे हैं वृंदावन वास करते हुए और प्रभुपाद जी के असीमित कृपा के कारण ये प्रसाद सेवा हम जिंदगी भर करते रहे, जब तक सांस रहे और सारे भक्त लोग करते रहे और यही हमारा मनोरथ है। आप लोगों को आशीर्वाद से, सारे भक्तों को आशीर्वाद से हम ये प्रसाद सेवा करते हैं। बोलिए प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. My name is Advait Chandra Goswami. I love Srila Prabhupada because he traveled the world 12 times to teach everybody about the holy name of Krishna. If he wouldn't have done that, my Nana Nani would have never been devotees, my mom would have never met my dad, and I never would have been here. Thank you, Prabhupada, for making such a beautiful life for me in Sri Vrindavan Dham with my friends and family. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। मेरा नाम कृष्णा देवी दासी है और मेरे गुरु महाराज ही हॉलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। मुझे प्रभुपाद जी की सबसे बढ़िया चीज़ जो लगा वो है कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जाके फॉरेन में जाके सारे फॉरेन में सारे डिवोटी बनाए हैं, तो वो मुझे सबसे बढ़िया लगा प्रभुपाद जी की। जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी हरि नाम प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे और वहाँ से प्रचार भक्तों को बनाया, दीक्षा दी सबको और बहुत बढ़िया प्रचार किया और प्रचार करते हुए हरि नाम हर गली में हर जगह
मंदिर देश विदेशों में हर जगह हरि का नाम डंका बज रहा है। प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाया है अपने गुरु के बद, और वही मुझे सबको सिखा के गए हैं। हरे कृष्णा, माय गुरु नेम इज हिज ग्रेस कतुदास अधिकारी महाराज, डिसाइबल ऑफ गुरु शीला प्रभुपाद। एक छोटी सी स्टोरी है प्रभुपाद जी की जो उनको अति प्रिय है, और उनको अति प्रिय है प्रभुपाद जी को कि उनको कचौड़ी और समोसे अधिक प्रिय हैं। तब भी उनके कोई डिसाइबल्स अंतिम समय में वो लेके आए थे उनके लिए समोसे और कचौड़ियाँ। तो प्रभुपाद बीमार थे, तो उनके डिसाइबल ने कहा कि नहीं, ये नहीं पाना है प्रभुपाद ने कहा ये लाओ, कचौड़ी हैं, समोसे हैं, लाओ, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है यादवपति कृष्ण दास, मैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज के शिष्य हूँ। जब मैंने इस्कॉन वृंदावन में प्रवेश किया तो प्रभुपाद जी का जो बहुमूल्य ग्रंथ है उसको मैंने अध्ययन किया। जो ग्रंथ ना तो इसका कोई साधारण न्यायिक तरीके से कोई किसी ने जवाब दिया है ना देगा, इतना वैज्ञानिक ढंग से भगवान के विज्ञान को वो प्रस्तुत किए जिसके वजह से संपूर्ण जगत को वो उद्धार कर रहे। तो ये प्रभुपाद जी जो हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है, और प्रभुपाद जी के ग्रंथ और प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है मेरे जीवन के लिए बहुत ही एक संपद है। हरे कृष्णा। हम दोनों वृंदावन इस्कॉन गौशाला में सुबह में पादुका की सेवा देते हैं, और श्री प्रभुपाद जी के कृपा से 2 साल से ये वृंदावन गौशाला में हम लोग सेवा करता हूँ किचन में, और 1 साल अभी इस वेस्ट एंड में पादुका में सेवा करता हूँ। इसके बाद प्रभुपाद जी के कृपा से आज इस्कॉन सारा दुनिया में बहुत बड़ा संस्था हो गया, और अब तक वैष्णव पर सभी भक्त लोग की कृपा से आज कौन ये पादुका सेवा करता चाहता हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna. My name is Chaitanya Kedia. I serve under the guidance of my Guru, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Today we celebrate the sacred appearance day of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Born in 1896 in Calcutta, he came to the West at the age of 69 to spread Lord Krishna's message to the world. Through His mercy, we have the holy name and the path of devotion. On this auspicious day, we offer our deepest gratitude and pray to follow in His footsteps. My name is Padmini Devi Dasi. I am disciple of His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj. About Prabhupada, it is like I am very obliged to Prabhupada. Because of him, I am in this movement. And whenever I think of Srila Prabhupada going at an advanced age to all over the world and preaching, it literally brings tears in my eyes. Because in that old age, usually people prefer to sit at home and rest. But Prabhupada, in spite of all the difficulties, he has taken a challenge for us. So I pray to Prabhupada that he keeps me engaged always in service of him as well as his pure disciples who have sacrificed their life for him. Hare Krishna. My name is Uddhav Bandhu Das. I'm a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. I'm serving in Vrindavan, ISKCON Vrindavan from last 14 years. And my core services are Govinda's Restaurant and ISKCON Vrindavan Television. So we are very grateful to be a part of this wonderful temple, and because the parampara which is coming from Krishna till Prabhupada, and then like my Guru Maharaj, myself, and it will go on. The best thing which I like about Prabhupada books which changed my life was I was traveling and I read Beyond Birth and Death, which someone distributed me in ISKCON Vrindavan. So after reading that book, I was shocked and I realized if everything which is written in this book, if it is true, then I'm in trouble with all my material achievements or my material aspirations. And then after that, devotees somehow that Krishna arranged in such a way that devotees helped me to become part of this temple. And since then, I'm serving. So I'm very grateful to Prabhupada, my Guru Maharaj, and all the devotees who are here serving with me. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. I am Lakshmi Priyadasi, disciple of His Holiness Giridhar Swami, who is a disciple of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada has been very instrumental in my life. Whatever today I am doing service is because of His divine mercy. And it was something which I know I cannot dream of any. It is by His God's mercy I have been able to do a small services to the country. Yeah. So I'm not the direct disciple, but I'm the grand disciple, and constantly I pray to Him to give me more and more mercy so that I can do more and more service. मैं श्रीला दीनदयाल और अपने श्रीला तमाल कृष्ण महाराज का शिष्य है। आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ प्रभुपाद जी के विषय में। प्रभुपाद जी ऐसे संत हैं जो नारद जी का अवतार की भूमिका में निभाया। उन्होंने पूरे संसार को हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को लेकर के गए। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जैसे अन्य अनेक ग्रंथों का उन्होंने अपना व्याख्या दिया और सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। आज उसी ज्ञान से सारा सनातन धर्म से सारा विश्व जुड़ गया है, जो कभी परीक्षित महाराज के जमाने में जुड़ा हुआ था। आज लगता है श्रीला प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज जैसे पूरे संसार के साम्राज्य के स्वामी भी हैं। मेरा नाम हनुमान प्राण दास, मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी का शिष्य हूँ और लगभग 15 साल से इस्कॉन में हूँ। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से, प्रभुपाद जी की बुक से, भगवत गीता, भागवतम, देशामृत, बहुत सारी बुक्स हैं जो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, उनके बारे में अध्ययन करके और लोगों को उनके बारे में बता करके हम लोगों को भक्त बनाते। पहले तो खुद बने, उसके बाद पढ़ के और लोगों को बताना, समझाना, लोगों को नाम जप के बारे में बताना, स्कूल कॉलेज में जाकर के मोटिवेशन करना, बच्चों को प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बारे में बताना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। My name is Tribhubannath. I'm a disciple of His Holiness Rampush Ramchandra Swami Maharaj. So this morning we had the next generation to say a few things about the incredible work of the Prabhupada in this age. Precisely, I will not be they have the capability to say this, to say Prabhupada's contribution for the development of human spiritual growth. But I will deeply say that I have deep appreciation for all that Srila Prabhupada has given to mankind. I pray that we generations we keep pushing his vision and mission to the extent that we can. Hare Krishna. हरे कृष्णा, मैं सुंदरी श्यामा देवी दासी हूँ। मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी की शिष्या हूँ और प्रभुपाद ने देश विदेशों में जाकर उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार किया है। और एक संत का, असली संत का ही पहचान होती है जो कृष्ण को बांटे, और प्रभुपाद ने वही किया है। एक शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा का भरण पोषण के लिए कृष्ण नाम। तो एक जीवात्मा का कल्याण कृष्ण नाम से है, तो प्रभुपाद ने कृष्ण ही दिया है। ऐसे श्रीला प्रभुपाद को मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं उनका ऋण नहीं चुका सकती हूँ। हरे कृष्णा। Hare Krishna, my name is Vrindavan Chandra. I am the disciple of His Holiness Sabak Swami Guru Maharaj. Thank you, Srila Prabhupada, for giving us so much valuable books. Thank you, Srila Prabhupada. We always read these books and learn all the shlokas from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita at Sunday school. And thank you, Srila Prabhupada, to give us an opportunity to sing for you in Sunday Kirtan Mandali, 24-hour Kirtan Mandali. At every Sunday we sing in 24-hour Kirtan Mandali. On Monday we sing on your Samadhi, and at Saturday we sing, we do Nagar Sankirtan. Oh Srila Prabhupada, as you said that if you miss Mangalarti, then that day you must fast and do books distribution, mostly Krishna book. Oh Srila Prabhupada, I am trying to do Mangalarti, but I face many problems. Srila Prabhupada, please bless me. That can I always every day wake up Mangalarti and chant 16 rounds. Hare Krishna. हरे कृष्णा, मेरा नाम याश्री है, मैं वडोदरा से आई हूँ। तो मुझे आज प्रभुपाद जी के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा किया गया है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे
चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पर आए थे तब कहकर गए थे कि एक दिन आएगा जब पूरा संसार हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करेगा। My name is Ramdas. I live the ISKCON Mandir Vrindavan. And something glorifies you, Prabhupada. बस हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामाई रामा हरे हरे। मेरा नाम वरुण सोनी है, मैं बड़ौदा से हूँ। और जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने इसके विषय में बताया है कि नगर नगर गांव गांव में भगवान कृष्ण का नाम गूंजेगा और सब कोई इस नाम के कीर्तन पे नाच उठेंगे। तो आज प्रभुपाद जी की कृपा से सब भक्तगण इस नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. My name is Ramshi Bharadwaj and my parents are disciples of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Srila Prabhupada has given us this material books which I love to read every day. Thank you, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Kamala Devi Dasi. I'm disciple of His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Srila Prabhupada appeared in this material world to fulfill the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and spread the Mahamantra all over the world. And this was also what Bhaktivinoda Thakur predicted, that there will be a time that devotees from Germany, US, France, Italy, China, East and West, all the devotees will come together in Sridham Mayapur and will chant the holy name of the Lord. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा। मेरा नाम है बलराम ईश्वर दास। मैं स्पिरिचुअल मास्टर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मैं पहले जीवन में थे बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। अभी तो प्रभुपाद जी का किताब पढ़ के और प्रभुपाद जी जो भक्ति का साधना भक्ति दिया है उसके बारे में जो भी प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ के उसका मेरा लाइफ में बहुत अच्छा हैप्पीनेस मिला है। आई एम वेरी हैप्पी टू सर्व इन कृष्ण बलराम टेम्पल। हरे कृष्णा। My name is Simran. I'm aspiring for initiation from His Grace Vaisheshika Prabhu. And Srila Prabhupada's appearance day is coming up in just 6 days, and I'm thinking about how he's opened up a portal to the spiritual world, and we wouldn't have any of this without him. And so I'm trying to cultivate ever deepening gratitude. It's never enough, but Prabhupada's given us so much. Hare Krishna. मेरा नाम है नवद्वीप दास और मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का शिष्य हूँ। श्रील प्रभुपाद के संदर्भ में कितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वीरा गीत में आप सुनते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। तो इस कथानक के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने समस्त जगत में सारे जीवों को उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवतम संपूर्ण जगत में फैलाया है और श्रीमद् भागवतम रूपी इस सुंदर कथा को पूरी तरह से प्रसारित किया है। तो गोपिया कहती है भूरिदा जनः, तो सर्वोत्तम ऐसे दानी हैं श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you, Srila Prabhupada. You are a true spiritual ambassador. You actually gave us the taste of how spiritual life is. Thank you very, very much. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. You taught us cooking can also be a samadhi because this is a direct service of Srimati Radharani and Yashoda Mata. Thank you so much, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Srila Prabhupada, for saving my life from the age of Kali. Thank you, Srila Prabhupada, for giving me my Guru Maharaj, for giving me Prasadam, for giving me your books. Thank you, Srila Prabhupada. I am very much grateful to you. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.
Hare Krishna Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. As Guru Maharaj described, you are truly an ocean of mercy. But you've changed my life to such an extent. And if we dedicate our lives to distributing your books, I can only imagine the countless more lives that will also be changed. All glories to you, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Myself, Madhu Das, disciple of His Holiness Radha Govinda Das Goswami Maharaj. Here we are in one and only place, Divine Samadhi Temple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gave us topmost philosophy which you will never get anywhere else. He gave us the holy names of the Lord, which is direct Krishna himself in the form of Hare Krishna Mahamantra. He gave us huge beautiful temples where we can come together and chant the names of the Lord and hear the topmost philosophy from his disciples. Our Gopi Pathshala group of ISKCON Vrindavan from age group 3 to 7, they are going to present a poem for the pleasure of Srila Prabhupada. Do Prabhupada give us ISKCON under your care we are growing spiritually strong. Your Krishna book gives stories so sweet and shlokas of Bhagavad Gita we love to repeat. We'll chant and serve with all our heart and spread your message in every part. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. My name is Govinda Dasi. My spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. I oblige Srila Prabhupada with all my life, spiritual and material. He gave me this process of Krishna consciousness, the process of chanting the holy name, his wonderful books revealing us Krishna and association of his wonderful devotees. I have only one desire, life after life, to serve Srila Prabhupada and his devotees. Whatever ability I have, whatever the situation in the life, I just beg for this mercy. And he gave me also all material facility that I could continue my service and without any inconvenience and all the time. Thank you, Srila Prabhupada. Thank you, all the devotees. हरे कृष्णा, मेरा नाम अधोक्षज दास है। मैं पूजनीय वेद व्यास प्रिय स्वामी जी महाराज का शिष्य हूँ। मुझे आपने अवसर दिया शिला प्रभुपाद जी का गुणगान करने के लिए, उसका धन्यवाद। मुझे शिला प्रभुपाद जी के अनंत गुण में जो गुण सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है वो उनका स्वाभिमान। उन्होंने अपने स्क्रैच से शुरू किया। उन्होंने कभी किसी और से मदद नहीं मांगी, ना ही किसी और के फॉलोअर्स छीने, ना ही कोई जादू टोना कोई ऐसा उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने खूब प्रयास किया, अपने शिष्यों को पका कर खिलाया। सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने अपने हाथों से अपने शिष्यों को पका कर खिलाया। दिन रात उन्होंने किताबें लिखी, किताबों का अनुवाद किया। ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि इतने कम समय में, सिर्फ 10-12 साल के अंदर, जो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में जो मूवमेंट खड़ा कर दिया, ये देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता। ये सच में ही एक चमत्कार है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. My name is Yashoda Mai Devi Dasi. My Shiksha Guru is Vedavyas Priya Maharaj. And I'm sure amazing things have been said about Srila Prabhupada. It could go on endlessly, but he truly is our savior. I grew up in America, totally Bikharmic lifestyle, and just that I'm here in Vrindavan, in the shelter of of the Dham and him, I think is credit to his greatness. I don't, what else could we say, you know? Inconceivable mercy. And again, grateful to all the devotees who have carried on this mission so nicely to continue to give us their divine association. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Manasik Shadas, disciple of His Holiness Bhaktivedanta Damodar Swami Maharaj. Srila Prabhupada was not just a saintly person, he was a divine architect. Having understood and tested the potency and the value that comes with Krishna consciousness and love of God,
He not only planned, but he executed one of the most elaborate plans for everyone in the whole world to come to know Sri Krishna. He traveled at a very old age, went through so much challenges so that we may relish Krishna consciousness, and ultimately I've come to benefit from that, and I understand now that I owe everything in my life to Srila Prabhupada. So on this day, I celebrate Srila Prabhupada. My name is Padmavati Devidasi. I'm living in Vrindavan for 26 years. I'm disciple of Indradyumna Swami. And I'm so grateful to Srila Prabhupada. Every day I'm coming to Samadhi to pay obeisance to Srila Prabhupada and thanks Srila Prabhupada for this very wonderful and blissful life which he gave us. All my family is also devotee, and we was living for a long time, me and my mom and my daughter in Vrindavan. And all time, every day, I'm trying to come for Srila Prabhupada Guru Puja and then Srila Prabhupada. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम संजय है और प्रभुपाद जी का जो इंस्पिरेशन है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं धर्म के बारे में, वो उस लेवल से नियम, उस तरीके से सनातन धर्म की जो उच्च कोटि की जो साधना है वो हम नहीं पहचान पाते थे। जैसे ही मैं इस्कॉन से जुड़ा और प्रभुपाद जी के शरणागत हुआ तो वहाँ जाके पता लगा कि कैसे सनातन धर्म में नियम और जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, और उससे कैसे मेरा जीवन बदला है मैं मेरे परिवार का बहुत जानता हूँ। Hare Krishna, this side Ganga Kripa, disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. He is a disciple of Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada has given everything to this ISKCON, to us and the coming generations. My daughter, she is filled with love, care and devotion as Srila Prabhupada has given us. Like our dear Mahadevi Mataji, she always tells us with the beautiful dramas, the cultural programs, glorifying everything. Our Braj Prabhu, he tells us with his beautiful pictures, upcasting, taking everything very seriously but in a fun and entertainment kind of performance, which tells everything very joyfully and sophisticatedly, whatever Srila Prabhupada has given us. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So my name is Sarang Thakur Das, disciple of Vijayanagar Bhakti Swami. Although I joined in ISKCON 92 in my village, but I came to 98 in Vrindavan and joined full-time here. And since I came, since from the beginning I'm serving in the BBT. And actually BBT was established by Srila Prabhupada in 1972 when Prabhupada was the trustee. Also 2 of his disciples, Giriraj Das Brahmachari and Shamsundar Das Adhikari. So they were started it in USA. But now in India is also have spreading like anything. We distribute lakhs and lakhs, even crores of books because of Srila Prabhupada grace. So I wish to continue this service. If devotee bless me, then I until my last breath I want to do this BBT service, because I know what is this. I understand what is BBT and what is Prabhupada books. Whoever reads the Prabhupada book, definitely 110% his mind will change. He will become Krishna conscious. Hare Krishna. My name is Radhika Priya Devi Dasi. I'm a disciple of His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. I cannot imagine my life how it would have been without receiving the causeless mercy and blessings of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gave us the highest gift of Krishna consciousness, love of Godhead, and Sri Vrindavan Dham. I am so fortunate and grateful for receiving these blessings, and my prayers for continuation of my journey in this Krishna consciousness, so I can make my life perfect in this lifetime.
All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. My name is Mitravinda Devidasi. I'm disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. I'm very fortunate to be a part of ISKCON, and the best thing I found that is given by Srila Prabhupada is his books. Books are the lifeline of this ISKCON, and it has really saved my life. Many a times when I feel down, and books has always saved me. Reading books is a wonderful thing that I love to, and my daughter loves to read. Vamshi, she's just 10-year-old, but she just loves reading the books of Srila Prabhupada, Krishna books. Every day she reads Krishna books and all the books of Srila Prabhupada. Thank you so much Srila Prabhupada for giving us books. Hare Krishna. हरे कृष्णा। मैं प्रेम प्रदीप दास, और श्री वृंदावन धाम में हम बहुत ही सौभाग्य हमारा कि श्री वृंदावन धाम में हम और श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि जो आज हम श्री वृंदावन धाम के बारे में हम और सभी लोग जान पा रहे हैं। नहीं तो हम सब जानते भी नहीं थे कि श्री वृंदावन धाम है क्या। श्रील प्रभुपाद जी के विदेश जाने के पहले यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। आज प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि जो इंडियन और देशी भक्त भी और विदेशी भक्त भी आकर के यहाँ पे सुंदर तरीके से अपना भजन कर पा रहे हैं। श्री राधा कुंड के बारे में जा रहे हैं, ब्रज के अलग अलग लीला स्थलियों के बारे में जान रहे। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। Hare Krishna. My name is Ramashakti Devi Dasi. I am disciple of His Holiness Pataka Maharaj, which is, he is a disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. I am just so grateful to my Guru Maharaj and as well to Srila Prabhupada, because deeply grateful, full heart grateful to Prabhupada. Because for me, my experience was, because of Prabhupada allowed to be the ladies to live in the ashram. For me was the amazing opportunity. I can becoming at least a little bit Krishna consciousness. Otherwise, for me, could be impossible. Then, the devotees, they allowed me to be in the ashram because Prabhupada already authorized the ladies can live in the ashram too and practice Krishna consciousness. Then this is what I did, and this is the best thing I did in my life, just to live in the ashram and follow Srila Prabhupada's instructions. It cannot be better thing. This is the best I did in my life. And now I'm so grateful to Prabhupada. Because of him, my life is nothing to regret. Everything is positive and full of happiness. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। मेरा नाम कृपालु चैतन्य दास है, और जो मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी, और जो ये प्रभुपाद जी ने हमारा ISKCON जो स्टार्ट किया है, मैं इसके लिए मतलब प्रभुपाद जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे हम जैसे जो लोग हैं जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी हम ज्ञान ले पाए और दीक्षा ले पाए। उन्होंने अपने डिसाइपल्स जो थे एक ढंग से इस तरह के डिसाइपल हैं, जैसे एक नग जो है हीरे की तरह उनके डिसाइपल्स हैं, जो हमें अपनी कृपा से जो हमें दीक्षा दे रहे हैं और हमें ज्ञान उनसे प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी की हम पे बहुत अनुपम कृपा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद जी का, जो उन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी संस्था बनाई है और हमें इतना कुछ दिया है। हरे कृष्णा। I am Hari Bhakti Devi Dasi. My Guru Maharaj is Gopal Krishna Goswami Maharaj, and Srila Prabhupada is the most amazing spiritual grandfather. He taught me how to love. I was always searching for real love in this world, and he said in one of his lectures in Mumbai 1971 that real love is complete surrender. So he showed me how to find real love, how to show real love in this world, and also he gave us the telephone number of Krishna. So if I chant Hare Krishna, then I can just call up Krishna, and like that way I can always be happy. So I'm very grateful to him. Hare Krishna. Hare Krishna. मैं गौरव दास परम पूज्य जगदीश महाराज का डिसाइपल हूँ। मैं तो अपना को बहुत गर्वित करता हूँ जो ISKCON में सेवा करने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जी के समर्थन आके मुझे अपना परम धन्य मानता हूँ। मुझे गर्व होता है जो मैं ISKCON में प्रभुपाद का मिशन में हूँ, और ऐसा गुरु कोई है ना होगा। इतना सुंदर सिद्धांत, इतना सुंदर उसका कार्यक्रम बहुत सुंदर है।
प्रभात का सबसे अच्छा मिशन है, जिस हरिनाम प्रचार करो, सुशासन करो, और इसी से लाखों लोग उपकृत हो रहे हैं और प्रसाद पाते सब भगवान को धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। Hare Krishna, my name is Gauramani Devi Dasi. I'm a disciple of His Holiness Bir Krishna Goswami Maharaj. Hare Krishna, my name is Param Das. I'm disciple of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. And today we're going to share with you the glories of Srila Prabhupada and how he changed our lives. Prabhupada taught us how to take the Sankirtan around the world, everywhere, every home and village. Srila Prabhupada gave us the holy names. Srila Prabhupada gave us Srimad Bhagavatam, and Srila Prabhupada gave us the association of hundreds and thousands of devotees all over the world. Hari Bol. We are so blessed with Srila Prabhupada in our lives. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Kartamisha Devi Dasi. My Guru Maharaj is Bhakti Tirtha Swami. And actually, I was just thinking about Srila Prabhupada, that he's the one who deserves the Nobel Peace Prize. There's nobody, not one single person, I don't care how intelligent, smart, scholarly, whatever. Prabhupada has done the only thing that the human society needs. This is a peace formula that he was trying to spread all over the world, and he's been very successful at spreading it. So everyone should take advantage of what the gift that Prabhupada has given us. हरे कृष्णा, मेरा नाम ललित कृष्ण दास है। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है और प्रभुपाद के एकदम खास है, राइट हैंड है। और दूसरी बात, जो प्रभुपाद ने हमें जो ये मार्ग बताया है, ये इतना अनमोल मार्ग है जो कि किसी को कोई बताता नहीं, लेकिन जो भक्ति है, ये भक्ति के वजह से हर व्यक्ति का जीवन सफल होता है और इस वजह से ही आदमी गोलोक धाम जा सकता है। आज माया के चक्कर में हर व्यक्ति फंसा पड़ा है और वो मुक्त होने को सोचता है, लेकिन उसको टाइम नहीं। लेकिन प्रभुपाद में पूरे वर्ल्ड में जाके 108 मंदिर बनाकर लोगों को भक्ति में लाया है और वो हिसाब से आज सब भक्त हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। Hare Krishna. We all are part of Vrindavan Krishna Balram Mandir Prasadam Seva team. Without Prabhupada's mercy, this life would have been meaningless. And Prabhupada had created such a wonderful place where whole world can live, and such a great mission where the food for life. So, and we are privileged and we feel really blessed to be part of this service and mission of Prabhupada. And we pray to the lotus feet of Prabhupada that we be engaged in his service life after life. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. My name is Tirtheshwari Radhika and I'm a disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So here we are talking about Srila Prabhupada, the epitome of devotion. Srila Prabhupada, the beacon and the lightning star of Krishna consciousness. His presence in my life has come from the past 20 years. Outwardly seeing, we have never met him, those who saw in second and third generation, because he has left the planet long back. But we really meet him daily at Guru Puja, at his Samadhi and his house. So, yeah, he's welcoming us with his open arms. And I guess his legacy is continuing. But spreading more light to the world. Jai Shri Prabhupada. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा नाम आशुतोष है। मेरा नाम राजीव है। हम शीला प्रभुपाद से बहुत प्रेरित हैं और उनके संज्ञान में, उनके सानिध्य में काम करते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है। महाराज ने देश विदेशों में जाकर के जो भी नाम प्रचार किया कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज का बहुत बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ हम लोगों को, इसके हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद राजीव जी। श्रील प्रभुपाद के बारे में मैं क्या कहूँ। मायापुर से उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी, उन्होंने लोगों को जोड़ा है एक साथ और ठाकुर जी के चरणों में सबको लाया है। ये जो उन्होंने कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा जो एक रेवोल्यूशन उन्होंने खड़ा किया था, वो आज रंग लाई हुई है और उससे कितने लोगों को इससे जो है लोग प्रेरित होकर जो है अब
ठाकुर जी के चरणों में आ रहे हैं। ये देख के हमें बड़ी शांति मिलती है कि हम सबकी सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक के हृदय में राधा रानी एवं कृष्ण बसे हुए हैं। My name is Govinda Kundevi Dasi and I'm trying to be a disciple of His Holiness Devamrita Swami. I have been staying in Delhi all through my life, but I think to get Krishna consciousness, I went all the way to Australia, where I met people who were Prabhupada disciples and they were serving Prabhupada. So I got a chance to join Krishna consciousness. Thank you so much, Prabhupada, who suffered so much for introducing this Krishna consciousness. And I hope I'm happy to be a family, part of a family. And I hope I'll be able to serve your mission. Thank you so much, Prabhupada. Hare Krishna. My name is Achyut Chandra Das. My guru is His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Sri Guru, and all glories to His Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, I remember the first time when I bowed down to Srila Prabhupada, someone says he's our founder Acharya. And I looked at him, I said, this person is very simple. Then I realized that the all energies of Prabhupada actually lies with his simplicity. The kind of the answers and the kind of the answer which cannot be further, there cannot be any question. There are so many instances. It will be long if we go with that. But I sometimes realize that this person cannot be an earthly person. It cannot be, because the kind of answer which he has, it's all close-end. There is no chance of disputing that. It's very clear and conscious. Hare Krishna. My name is Purnima and my spiritual master is His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. And we are very, very grateful to Srila Prabhupada, because if he was not there, we would not be here too. So all glories to Srila Prabhupada, and whatever he has given, all these books, all his instructions in there, we don't need anything more than that. So if we can just continue the process he has given us, there's a sure success. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। मेरा नाम है दामोदर दास और मैं वृंदावन में रहता हूँ और मैं श्रीला प्रभुपाद के एमवीटी आश्रम में काम करता हूँ और मैं उनकी जो लाइफ जर्नी है मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कार्य करे हैं वो आज तक किसी ने नहीं करे। उन्होंने जो भी काफी सारी जो बुक्स थी उनका सबका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करा, ताकि पूरी दुनिया उनके बारे में पढ़ सके और हमारे हिंदू धर्म के बारे में सीख सके। जय श्री राधे। हरि बोल टू ऑल डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हम हैं एमवीटी आश्रम में, जो बनाया गया था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा उनकी पर्सनल सेविंग्स के साथ, ताकि वो कल्याण कर सकें। यहाँ आए हुए सारे डिवोटीज का उनके लिए रहने की व्यवस्था और बाकी सभी व्यवस्थाओं को देख सकें। तो इसी आश्रम में काम करते हुए हम बढ़ा रहे हैं उनके मॉरल वैल्यू और टीचिंग्स को सारी दुनिया के भक्तों के साथ। श्रीला प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, my name is Lalita Devi Dasi. My Guru Padma is Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Srila Prabhupada ki jai, Bhagavati Vishwa Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada was Paramahansa descending from the spiritual world just to deliver all the jiva of the entire world. And actually he brought Goloka Dham all over the world. And my Guru Padma used to say that Bhaktivedanta Swami Prabhupada only one in one kalpa, so it means that very, very rare personality. Only one in one kalpa. Nobody can do whatever he did. Nobody can do. He was really Jai Ho Srila Prabhupada. Hare Krishna. I want to bring all of your attention that time during 70s. And imagine that he thought, when he had nobody, he had no money also, to travel all the way to West, where so much karmic things are around, and he thought that talking about Vaishnavism, talking about Krishna, they're going to listen to you. And he managed to do it. When I start thinking about him, I stop there. Because in this life, or I don't know in how many lives, a general human being, a normal human being, is not even able to think about it.
That's why he's one in billions. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Myself, Veer Narasimha Das, disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Srila Prabhupada was a visionary spiritual leader, a bridge between culture, a profound philosopher, and a founder of International Society of Krishna Consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, my name is Mitron. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा, माय नेम इज मेरा नाम श्रीनिवास आचार्य दास है। गोपाल कृष्ण महाराज हमारे गुरु जी हैं और प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम लोग आज ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बुक्स से हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कृष्ण कौन है और भगवान कृष्ण को कैसे जान सकते हैं और उसके बारे में हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। नहीं प्रभुपाद का मिशन है, हम लोग का ये मिशन है। हरे कृष्ण। Hare Krishna, my name is Srinal Pandit Das. I'm disciple of His Holiness Loknath Swami Maharaj. So, Srila Prabhupada at a very advanced age, we traveled all the way to the US, the American continent by ship. On the way, we had massive heart attacks. The whole idea of going to the Western countries is to preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu, spread Krishna consciousness, and make people know who is Krishna and all the Krishna's activities. The best part I personally like what Srila Prabhupada did. He did a lot of things. The best part I liked is he simplified the whole devotional practice process, very practical. You know, whatever skills you have, you can utilize those skills in Krishna's service. And he created a platform where people from different walks of life, different caste, creed can come together and practice Krishna consciousness in a very simplified way. Whatever skills they have, they can use that in Krishna's service and very happily with that and can go back to Godhead. Very simplified process. Thank you so much. हरे कृष्णा, मेरा नाम चैतन्य प्रसाद दास है। जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया है वो लगता है और कोई कर नहीं सकता। जैसे उन्होंने स्ट्रगल झेला, काम पे जीत गए, वहाँ से सारे लोगों को भक्त बना के लाए। उन्हीं से इंस्पायर होकर हम भक्त बने यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीला प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा। Hare Krishna, my name is Sankirtan Das, disciple of His Holiness Loknath Swami Maharaj. I'm happy to be here in Vrindavan Prabhupada's home. The study in Gurukul that Prabhupada make for us, it's like wonderful education in Gurukul we had, was Prabhupada, everything. It's nice to be in Vrindavan Dham of Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Prabhupada ki jai. Hare Krishna. This is Narhari Das from MBT Ashram Zekavan. हमारे जीवन में जो मुख्य बदलाव आया श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें मैंने 1986 में पहली बार बॉम्बे मंदिर से खरीदी थी, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आया और जिससे मैंने ये जाना कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा मैचलेस गिफ्ट दिया जो आज से पहले पूरी दुनिया में किसी ने उस गोपनीय रहस्य को खोला नहीं था। क्या था गोपनीय रहस्य? कि पूरी दुनिया को एक अमर जीवन के बारे में बताया कि हमारे हम जो जीवात्मा है इसमें डिजीज कंडीशन में है कि जीवात्मा की जो हेल्दी कंडीशन है वो क्या है कि भगवान के धाम में भगवान की सेवा के लिए हम इसको अपने रहस्य को प्रदेशी भक्तिवान स्वामी प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। मेरा नाम परम करुणा दासी है। मैं परम गोपाल कृष्ण मेरा बंदी शिष्य हूँ और श्री प्रभुपाद की कृपा से मुझे गुरु गोरान की कृपा मिली और चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है वो इतना हृदय को छुआ कि मतलब अभी भी हरिनाम के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ गई और ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम चंद्रिका केशरी देवी दासी है। मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की शिष्या हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस था जो कि कल आने वाला है, सो मैं फर्स्ट टाइम मैं 14-15 साल की थी तो फिर मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन टेम्पल आई थी और उस समय प्रभुपाद जी जब मंगला आरती गा रहे थे मैं उनको ढूंढ रही थी कि कौन है जो मंगला आरती गा रहा है और फिर ऐसे 2-3 दिन उनको मतलब सर्च किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे गुरु गौरांग की कृपा से भक्ति हुआ। Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. This is Nandinani Gopi Devi Dasi. I'm a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Gurudev. Srila Prabhupada has given me goal of my life, also hope in this hopeless world, where he teaches me that even a tiny creature like me with lots of limitations can also serve Krishna, the supreme personality of Godhead who has created everything. Can you imagine I can also serve him?
That Srila Prabhupada, who has made bhakti so simple, so approachable, that I can also think of doing some service. That Srila Prabhupada is magical. In Srila Prabhupada book, all the books, even if I pick a single word, it's complete. What to say about whole book? So Srila Prabhupada is Krishna Doot, no doubt about it. Srila Prabhupada has given us everything, so it's my turn. On this special occasion, I beg Srila Prabhupada's mercy and all your Vaishnavas' mercy. Please help me so that I can serve Srila Prabhupada the way he wants me to. Srila Prabhupada ki jai. The lotus feet of Srila Prabhupada are the only way by which we can attain pure devotional service. We bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, we can cross over the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna and Balaram. Our only wish is to have our consciousness purified by the words emanating from Srila Prabhupada's lotus mouth. Attachment to Prabhupada's lotus feet is the perfection which fulfills all desires. Srila Prabhupada opens our darkened eyes and fills our hearts with transcendental knowledge. He is our Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of Srila Prabhupada's character. Srila Prabhupada is an ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and Master of the devotees. O Srila Prabhupada, O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Srila Prabhupada, we beg you to help us to continue to spread your fame all over the three worlds. Jai Srila Prabhupada! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,